Hello everyone. Our today's discussion is about major constitutional amendments. Those amendments took place during 1951 to 2021. And these amendments have made significant changes in the polity of our country. First amendment, it took place in 19 it started from 1951. This amendment added ninth schedule. This amendment added ninth schedule. The purpose of this amendment was to protect the land reforms and laws related to land reforms from judicial review. Judicial review from court's examination. The examination of legal provision by the court. Therefore, this amendment added ninth schedule. Secondly, this amendment added three more grounds of restrictions on freedom of speech and expressions under Article 19(2). These grounds were public order, friendly relation with foreign states and incitement to an offense. ये तीन ग्राउंड्स पे ये तीन ग्राउंड्स लाए गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के तौर पर. These restrictions were made as reasonable and thus justiciable. These three more grounds जो है वो है public order, friendly relations with foreign state and incitement to an offense. Thirdly, it gave power to the state to make special provisions for the advancement of socially and economically backward classes under Article 15. This is about First Amendment. We move to Second Amendment. Second Amendment, what happened? It removed the upper limit regarding population. It removed that limit for a parliamentary constituency. Article 81(1)(b). The scale of representation in the Lok Sabha was readjusted, and therefore one member could represent even more than 7,50,000 persons. ये अमेंडमेंट सेकंड अमेंडमेंट थी. सेवंथ अमेंडमेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है सेवंथ अमेंडमेंट. सेवंथ अमेंडमेंट के प्रोविजन के हिसाब से इट प्रोवाइडेड फॉर introduction of a common high court for two or more states and union territories. The jurisdiction of high court was extended to union territories also. Union territories were also the matters of union territories were also within the purview of high court. It abolished classes ABCD जो क्लास के हिसाब से स्टेट्स बने हुए थे वो निकाल दिया. It abolished क्लास ABCD स्टेट्स एंड रीऑर्गेनाइज कर दिया. और रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 16 स्टेट्स हो गए एंड 6 यूटीज हो गई. सेवंथ अमेंडमेंट. टेंथ अमेंडमेंट की बात करें तो 1961 में लाया गया 10th अमेंडमेंट, एंड बाय वे ऑफ दिस अमेंडमेंट दादरा एंड नगर हवेली the UTs incorporated in the Union of India as Union Territory as UT. Amended Article 240. Amendment हुआ 240 में. 12th, 13th, 14th तीन अमेंडमेंट्स हम एक साथ इसलिए ले रहे हैं बिकॉज 1962 में ये अमेंडमेंट्स आई और इन अमेंडमेंट्स का मकसद क्या था वो हम यहाँ देख लेते हैं. 1962 की 12th अमेंडमेंट, that this amendment resulted in incorporation of Goa, Daman, Diu as UT Union Territories. Goa, Daman, Diu as Union Territories. 1962 में 13th amendment आई, formation of Nagaland with special status under Article 371A. And then in 62 14th amendment के जरिए क्या हुआ? Incorporation of Pondicherry into the Indian Union and the Union Territories जो already थी गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, दमन and Diu were accorded the legislative and
Council of Ministers by way of 14th Amendment. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट पे हम आए थे, 1971 में हुई वो। 24th अमेंडमेंट में क्या हुआ? इट डाइल्यूटेड द फंडामेंटल राइट्स एंड इट मेड मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फंडामेंटल राइट में थोड़ा चेंज हुआ एंड सिमिलरली एक प्रोविजन की गई जिसके जरिए प्रेसिडेंट को जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा उसके लिए प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी कंपलसरी की गई। तो दिस वाज अमेंडेड, दिस आर्टिकल अमेंडेड आर्टिकल्स 13 एंड 368। 26th amendment, it took place in 1971. 26th amendment, privy purse and privileges of former rulers of princely states were abolished. Changes were made in Article 366 and it added Article 363A. ये हुआ 26 अमेंडमेंट के जरिए इन द ईयर 1971 में प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स के जो थे वो सब निकाल दिए। एंड 73 में जो 31st अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट के जरिए इट इंक्रीज लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545। 73 में 31st अमेंडमेंट इट इंक्रीज लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545 and then 36th amendment took place in 75. Sikkim was made a full-fledged state. It became 22nd state of Sikkim. 22nd state. 42nd amendment, very important amendment. ये 1976 में हुआ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज इट इज सेड दैट बहुत सारे इसमें चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर है ये अमेंडमेंट, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नंबर 1 शुरुआत करते हैं प्रियम्बल से। प्रियम्बल में चेंज किया गया। प्रियम्बल में क्या चेंज हुआ? सावरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ड्स, 5 वर्ड्स वहां पे आए। इन वर्ड्स की जगह पे सावरिन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पहले था, इसके बाद हुआ सावरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इट मीन्स दिस 2 words were added, socialist and secular words were added for the unity, for the words the unity of the nation है तो वहां पे हुआ unity and integrity of the nation, these words were added। पार्ट 4A ऐड हुआ इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज का। स्वरण सिंह कमेटी जो थी उनके रिकमेंडेशन, दिस न्यू पार्ट 4A वाज एडेड स्टेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमने देखा फंडामेंटल, हमने देखा अभी प्रियम्बल में चेंज देखा, अभी हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई है। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए गए। इसलिए ऐड किए गए, नंबर 1 टू सिक्योर opportunities for the healthy development of children and also equal justice and free legal aid, 39 and 39A में, ठीक है। Then taking steps to secure participation of workers, very important, 43A article in the management of the, ये लाया गया, taking steps to secure participation of workers in the management of industries, and then protection and improvement of the environment and safeguarding forest and wildlife, Article 48A. These 3 new articles were added। 5 सब्जेक्ट्स जो थे वो स्टेट के जो थे वो कंकरेंट लिस्ट में भेजे गए। कौन से 5 सब्जेक्ट थे वो देखते हैं। दिस अमेंडमेंट इन दिस 7th शेड्यूल में जो ये सब्जेक्ट्स है, 7th शेड्यूल में 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, protection of wildlife, wild animals and birds, weights and measures, and administration of justice. These subjects were shifted from state list to concurrent list. Then other changes क्या क्या हुए वो भी देख लेते हैं।
empowered the center to deploy its armed forces in any state to deal with a grave situation of law and order. The amendment made the president bound by the advice of the cabinet. Important amendment थी ये, important change था. It curtailed the judicial review power of High Court. High Court का power को थोड़ा restriction लाया गया, judicial review power को, freezing the allocation of seats in the Lok Sabha and Rajya Sabha seats as per 1977 census till 2000. And constitutional amendment bill shall not be challenged on any ground in any. इसके अलावा जो इलेक्शन जो ये था, what we call it as a, just a minute, I am just, टर्म ऑफ लोकसभा भी बढ़ा दी थी 6 साल के लिए. तो ये चेंजेस हमने अभी देखे हैं 1976 के अमेंडमेंट, जो कि 42nd अमेंडमेंट थी. बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स थी, बहुत सारी उसमें चेंजेस किए गए थे. उसके बाद जो चेंज हुआ गवर्नमेंट में, तो 78 में बहुत सारे उसमें बदलाव आए. 1978 कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट के जरिए क्या हुआ, अनजस्टिफाइड पावर जो थे गवर्नमेंट को मिले थे, वो पावर क्या हुए, अमेंड हुए, उसमें बदलाव लाया गया. और कौन कौन से बदलाव है वो देख लिया. राइट टू प्रॉपर्टी, इट रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स का लिस्ट में से राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया. इट गिव सिटीजन्स राइट टू कीप, अक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी. इट मेड राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट. नंबर 1, 44th अमेंडमेंट में याद रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी एक जो फंडामेंटल राइट था उसको निकाल के लीगल राइट किया गया. सेकेंडली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो इट एडेड वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल विच necessitated state to minimize inequalities in income, status and opportunities. समानता के लिए आर्टिकल 38 लाया गया. The state should maintain social order to promote the welfare of people of our country. Declaration of emergency के बारे में क्या चेंजेस हुए with regard to the grounds for the declaration of a national emergency? The amendment replaced the word internal disturbances with the word armed rebellion. Proclamation of emergency should be made only on the written advice tendered by the cabinet to the president. Approval of national emergency by special treaty. Approval is required to renew every 6 months. Article 20 and 21 shall not be suspended during national emergency. Proclamation may be revoked by subsequent proclamation. Regarding judiciary, it restored the power of high courts to issue writs for any other purposes besides the enforcement of fundamental rights. The amendment allowed the Supreme Court to exercise power of judicial review in the matter of election of president, governors and Lok Sabha speaker. This is about judiciary. Then about president's rule, it introduced new provision to put a restraint on the power of parliament. पार्लियामेंट के पावर के ऊपर रिस्ट्रेंट करने के लिए ये लाई गई प्रोविजन, दैट प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल बियॉन्ड 1 year, ये रेस्ट्रिक्शन लाया गया. इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविजन टू पुट अ रिस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल बियॉन्ड 1 year. ये 1 year के आगे नहीं. अदर टर्म्स में, अदर प्रोविजंस, अदर अमेंडमेंट्स में terms of Lok Sabha and Legislative Assembly were restored to 5 years, जो 6 साल कर दिया था. Empowered the president to send back the advice of cabinet for reconsideration. एक बार वो भेज सकते हैं. इसके बाद 1985 में 52nd amendment आई. This amendment is known as Anti-defection law, जो भी Anti-defection law के तौर पे इसको जाना जाता है. इसने 10th schedule ऐड हुआ इसमें. It provided for disqualification of members of parliament and state legislature on the ground of defection. So now we are going to see what is defection. Defection का क्या मतलब? 10th schedule में anti-defection law किस हिसाब से लाया गया? To prevent political defections driven by temptation of office or
material benefits or other like consideration. The parliament passed the anti-defection law in 1985. अभी मीनिंग क्या है? डिफेक्शन इज डिफाइंड एज टू abandon a position often to join an opposite party. अगर कोई पार्टी में जाना है तो लिविंग ओन पार्टी एंड गोइंग टू अनदर पार्टी ऑल ऑफ अ सडन, तो ये हो गया डिफेक्शन का मतलब है। और अगर ये कंडीशंस में नहीं है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हो जाए। कौन कौन सी कंडीशंस में डिस्क्वालिफिकेशन होता है, कौन कौन सी नहीं होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, बिकॉज दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स इस अमेंडमेंट का ये था, पार्टी मेंबर डज नॉट वायलेट। अगर एक पार्टी से चुनाव जीत के आया है तो उस पार्टी में जो डिसीजन रहेगा, उस पार्टी का जो अथॉरिटी रहेगा वो उसको मानना पड़ेगा। he cannot simply violate that. A party member does not violate the directive mandate of the party, and if he does so, he is bound to lose his membership. तो छोड़ना पड़ेगा पार्टी। The provision applies to both parliament and state assemblies. Members of parliament and state legislative assemblies are prevented from switching political parties. आज ये पार्टी, कल वो पार्टी, परसों तीसरी पार्टी। इस पे बंधन लाए गए, इस पे रेस्ट्रिक्शंस लाए गए। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कौन से ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुन के सदस्य है पार्लियामेंट का? द 10th शेड्यूल contains the following provisions with respect to disqualification of members of parliament and also members of legislative assemblies on the following grounds. कौन से ग्राउंड्स के ऊपर? वॉलंटरीली गिविंग अप द मेंबरशिप, अगर खुद दे दी तो फिर कोई सवाल नहीं है, राइट। नॉट फॉलोइंग हिज पार्टीज डायरेक्शन, ही इज नॉट फॉलोइंग द पार्टीज डायरेक्शन। इफ सच मेंबर वोट्स और abstain from voting contrary to any direction issued by such members on political party, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है, अब जिस पार्टी से चुन के आए उसने कुछ बोला है कि आपको ये वोट करना है या नहीं करना है, तो पर्पसली वो इंस्ट्रक्शन नहीं मानना, contrary to any direction issued by such members, तो फिर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मेंबर। नॉट फॉलोइंग हिज पार्टीज डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है, कोई पार्टी का नहीं है, बट क्या हो रहा है? इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंटली इलेक्ट ज्वाइंस एनी पार्टी, अगर वो चुन के अगर इंडिपेंडेंट आया है एंड इफ ही इज ज्वाइनिंग एनी अदर पार्टी देन ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर है तो इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एंड ऑफ 6 months, अगर 6 महीने बाद अगर वो है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड डिसीजन विथ रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन, द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस गिव्स हिज डिसीजन on disqualification of members whose decision remain final. The speaker of the house is the authority to decide on disqualification of such members. तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड प्रोविजन, अमेंडमेंट 1985, इंपॉर्टेंट प्रोविजन। देन 1989 में आई 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट 1989 में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। इस प्रोविजन के हिसाब से द वोटिंग एज वाज डिक्रीज फ्रॉम 21 to 18 फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव, so it became 21 to 18. The Constitution 69th Amendment, this is 69th, Union Territory of Delhi was given special status of NCT Delhi. ये 91 में हुआ, 69 अमेंडमेंट। देन 70th अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ, दिस अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड पौंडीचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये याद रखना है, इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इनको 92 में इंक्लूड किया गया। इसी तरह से 92 में दो और अमेंडमेंट है, वो है 8th शेड्यूल में नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी 3 लैंग्वेजेस हुए
added. Languages included in the 8th schedule: Nepali, Manipuri, and Konkani. And then 73rd Amendment. 73rd Amendment was very important amendment. Again, because it gave constitutional status to Panchayati Raj. Panchayati Raj को constitutional status मिला. And it added new part 9 and 11 schedule. This is very important. 1992 की जो अमेंडमेंट है वो पंचायती राज से रिलेटेड है. 2001 में 84th अमेंडमेंट. The number of seats in the Lok Sabha and assemblies are to remain same for another 25 years. 25 years means up to 2026. Then 2002 amendment. This amendment made elementary education a fundamental right. Very important provision. ये बहुत important provision है. Made elementary education a fundamental right. अभी इसमें क्या ऐड हुआ है? 21A फंडामेंटल राइट का पार्ट हुआ और उसमें क्या हुआ? इट डिक्लेयर्ड द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in such manner as the state में. तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की प्रोविजन जो है वो 6 to 14 years के बच्चों के लिए की गई. एंड एक इसमें आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन किया गया है, द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोवाइड एवरी चाइल्डहुड केयर and education for all children until they complete the age of 6 years. फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई. एक फंडामेंटल ड्यूटी इसमें ऐड की गई. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. यह आर्टिकल 51A में. First amendment, it happened in 2003. 2003 में हुई. The total number of ministers, including the prime minister, in the central council of ministers shall not exceed 15%. Very important. The total number of ministers, including CM, in the council of ministers in a state shall not exceed 15%. वहाँ भी वही है, state में भी वही, of the legislative assembly of the state. But the number of ministers, including CM in the state, shall not be less than 12 as per Article 164(1)(a). 101 Amendment. ये आई 2016. इसमें very important thing है, it introduced goods and services tax, GST. GST has commenced with the enactment of 101st Constitution Amendment Act 2016. Article 246A, 269A, 279A were added in the Constitution. The amendment made changes in the 7th schedule of the Constitution. GST के जो amendment है वो है 2016 की amendment number 101 and 102, 102, 102nd amendment 2018 में. It gave constitutional status to the National Commission for Backward Classes. It inserted a new Article 342A, which empowers President to notify the list of socially and educationally backward classes of that state, union, territory. 103rd Amendment. It took place in 2019. 19 के recent है. It changed two fundamental rights. Article 15 and 16. कौन से? Because it provides for the advancement of economically weaker sections of society. 10% of all government jobs and college seats will be reserved for people outside the high income. 2019 amendment. Then 104th Amendment. The amendment extended the deadline for the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and state assemblies from 70 years to 80 years. It removed the reserved seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies.
And the last amendment that took place in 2021, the amendment is brought to restore the power of the state by OBCs, other backward classes that are socially and educationally. Due to this amendment, the Supreme Court's judgment 11 May 2021 got annulled. Judgment had empowered only the central government for such identification. इसका मतलब यह है कि 105 के अमेंडमेंट के जरिए जो स्टेट गवर्नमेंट का पावर था वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर रिस्टोर किया गया ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके अदर बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन से अदर सिर्फ आइडेंटिफाई कर सके अबाउट अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. दिस इज अबाउट द अमेंडमेंट्स, द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स आज हमने देखिए. और ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम जो भी जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है और अमेंडमेंट्स की बात आती है, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है. थैंक यू वेरी मच.